Alaikum. Hello, dear viewers and listener. I hope you will be fine, happy, and healthy today. Today, we are going to begin presentation 8, page number 44, level 3. And the title of the activity is talking about past event, past continuous statement. सो माजी के वाक़यात, इवेंट्स मीन वाक़यात के बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे. एंड पास्ट कंटिन्यू, पहले माजी जारी, पास्ट मीन पहले माजी, कंटिन्यू जारी स्टेटमेंट बयानात के बारे में डिस्कशन होगा. सो हियर दे हैव रिटन द यूजेस ऑफ पास्ट टेंस दैट द पास्ट कंटिन्यू कंसिस्ट ऑफ वाज एंड वर प्लस वर्ब ing. It describe an action that was taking place at a specific moment in the past. ये ऐसे एक्शन के बारे में बातें करती है जो किसी ख़ास वक्त में माजी में जारी थे या कि माजी के किसी ख़ास टाइम में जारी थे. एंड देन दे हैव गिवन टू एग्जांपल. द फर्स्ट एग्जांपल इज एट 3:25 स्मोक वाज कमिंग फ्रॉम द विंडो. मीन 3:25 पर स्मोक धुआं आ रहा था विंडो से जब वो घर फायर पर थी. And the second one is during the rescue people were standing at the window. Rescue इस बचाव के दौरान people were standing at the window, लोग विंडोज पर खड़े थे, खिड़कियों में खड़े थे ताकि अपने आप को बचा लें. तो dear viewers, in this activity we are talking about past continuous tense. About what tense? Yeah, past continuous, talking about past event or past continuous tense. What does past continuous tense meaning in Urdu? पहली माजी जारी, पहली माजी. पास्ट मीन पहले माजी और कंटिन्यू मीन जारी टेंस, ऐसा ज़माना ऐसा टेंस जो माजी जारी का हो, पास्ट कंटिन्यूस टेंस. एंड व्हाट्स द आइडेंटिफिकेशन इन उर्दू? गुड. रहता, रही थी, रहे थे. At the end of Urdu sentences, these words come. When we translate this tense from English into Urdu, so at the end of Urdu sentences, these words come. For example, वो स्कूल जा रहा था, he was going to school. और हम स्कूल जा रहे थे, we were going to school. So was and were we use in this sentence as auxiliary verb. And we use this tense for what kind of action? Action or activities continue in a specific time in past. कि माजी के किसी ख़ास टाइम में जब जारी हो कोई एक्टिविटी, so we use past continuous tense. From the meaning also it's clear. Past mean past माजी, continue जब जारी हो कोई एक्शन पास्ट में, तो we are using it for such action. प्रेजेंट कंटिन्यूस जो मौजूदा ज़माने में कोई काम जारी हो. और फ्यूचर कंटिन्यूस मीन मुस्तकबल के बारे में हमारा इरादा है किसी काम के बारे में कि ये जारी होगा, तो वी यूज़ दिस टेंस. एंड व्हाट्स द पॉजिटिव स्ट्रक्चर? फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज सब्जेक्ट, then was over. When the subject is he, she, it, I or a singular noun, so then we use was. And when the subject is you, we, they or plural noun, then we use are. Already, dear students, we have talked about the tenses in detail. In detail, we have talked about the tenses in the previous lesson. You here are in the tenses. You should go to the tenses and watch it in the full way. Or complete uses of this tense you can watch over there. And then we use verb past form ing, present participle form we use. Present participle in all the continued tenses we use present participle form. Verb past form plus ing is called present participle. When the word continue come, continue, so it means that we have to use verb past form plus ing. Present continuous, past continuous, future continue, present perfect continue, past perfect continue, future perfect continue. So when the continue word come, then we use ing form of the verb. So here we will also use this one. For example, अगर हमें बिलाल स्कूल जा रहा है तो क्या कहेंगे? या बिलाल स्कूल जा रहा था, बिलाल was going to school. और हम कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे, गुड, we were reciting the holy Quran. तुम क्रिकेट खेल रहे थे, गुड, you are playing cricket yesterday, you are playing cricket last week, last month. कोई भी स्पेसिफिक पास्ट टाइम आप कहेंगे कि माजी में ये काम जारी था.
और इस तरह डियर व्यूअर्स व्हेन द सब्जेक्ट इज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नेगेटिव सेंटेंसेस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज सब्जेक्ट and after subject we use wasn't or weren't and then verb past form ing and then rest of the sentence. For example, Ahmad school नहीं जा रहा था. Good. Ahmad wasn't going to school. हम खत नहीं लिख रहे थे. We weren't writing a letter. जो भी वर्ब हो, लेकिन जब आप किसी स्पेसिफिक टाइम में कोई काम के जारी न रखने के बारे में कहते हैं तो यू विल यूज wasn't. We weren't taking tea. We were studying for the exam. हम चाय नहीं पी रहे थे, इम्तिहान के लिए स्टडी कर रहे थे. या they weren't writing a letter. They were gossiping each other. वो एक दूसरे से गपशप लगा रहे थे, gossiping, right? और अगर सवालिया फ़िक्रे हो तो फिर वज़ या वर फ़िक्रे के शुरू में होगा, फिर सब्जेक्ट पाइल होगा. पाइल ख्वा अगर वाहिद हो तो वज़ लगाएंगे, अगर जमा हो तो फिर वर लगाएंगे, और फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होगा. फॉर एग्जांपल, क्या अहमद खत लिख रहा था? गुड. वाज अहमद राइटिंग अ लेटर? सो येस ही वाज. हाँ वो लिख रहा था. या नो ही वाजंट, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट. खत नहीं लिख रहा था, क्रिकेट खेल रहा था. और अगर हम कहें कि क्या बिलाल और सलीम क्रिकेट खेल रहे थे? गुड. वर बिलाल एंड सलीम प्लेइंग क्रिकेट? येस दे वर. या नो दे वोंट, दे वर टेकिंग टी. चाय पी रहे थे. यस्टरडे एट 5 o'clock, कल 5 बजे पर. और इस तरह अगर WH क्वेश्चन हो डियर व्यूअर्स, ऐसे हो कि इंफॉर्मेशन क्वेश्चन हो, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हिच, व्हाई और हाउ, दीज वर्ड शुरू में हो, तो फिर हम ये लफ्ज़ शुरू में लगाएंगे और इसके फ़ौरन बाद वज़ या वर लगाएंगे और फिर सब्जेक्ट और फिर ये स्ट्रक्चर होगा. फॉर एग्जांपल, बिलाल कहाँ जा रहा था? वेयर वाज बिलाल गोइंग? ही वाज गोइंग टू स्वात. वो क्यों स्वात जा रहा था? गुड. वाई वॉज ही गोइंग टू स्वात? टू गेट एडमिशन एट जिहानजेब कॉलेज स्वात, राइट. वो कब स्वात जा रहा था? When was he going to Swat? Yesterday at 7 o'clock he was going to Swat, right. वो किसके साथ स्वात जा रहा था? Who was he going to Swat? He was going to Swat with his elder brother. अपने बड़े भाई के साथ जा रहा था. with his father, अपने वालिद के साथ जा रहा था. वो कैसा, यानी मतलब किस सवारी में स्वात जा रहा था, तो कैसा जा रहा था? Good. How was he going to Swat? He was going to Swat by a flying coach, by a 2D, by a car. जो भी mode of transportation हो, means of transportation हो, you will use this one, right. So आप जो मुख्तलिफ WH question लिख सकते हैं. Why were you playing cricket? To get exercise. Who were you playing cricket with? My class fellows and friend. Where were you playing cricket? At the river ground, at the riverside ground, right. When were you playing cricket? Yesterday at 4 p.m. we were playing cricket. So जो भी जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो फिर वर लगाएंगे और यही स्ट्रक्चर होंगे. अभी यहाँ पर एक एक्सरसाइज है, practice number 9, and it says use the past continuous verb to describe event at the plaza. Choose a verb that makes sense in each sentence. For example, that morning Elvira on the 3rd floor. So how can you fill the blank place? That morning Elvira was walking. Good. Elvira was walking on the 3rd floor. The first one, at 3:25 people were standing at the window. So standing, people were, एक से ज़्यादा लोग थे and they were standing at the window. The second one, firefighter were rescuing guest. Were rescuing guest, continuous tense. आप या तो was लगाएंगे या were. firefighter यहाँ एक से ज़्यादा है, firefighters were rescuing guest. The third one, people were yelling for help. People एक से ज़्यादा है, so were yelling for help, चीख पुकार रहे थे मदद के लिए. Fourth one, ambulances were taking people to the hospital. एक से ज़्यादा ambulance थे, ambulances
सो वर टेकिंग पीपल टू द हॉस्पिटल। नेक्स्ट वन है अ न्यूज़ फोटोग्राफर, ये एक बंदा है। अ न्यूज़ फोटोग्राफर वाज टेकिंग पिक्चर, सो वाज लगाएंगे, टेकिंग पिक्चर। 6 नंबर है फायर फाइटर्स वर क्लाइंबिंग लेडर, सो वर लगाएंगे, फायर फाइटर्स वर क्लाइंबिंग लेडर्स। एंड 7 नंबर गेस्ट एंड होटल वर्कर्स वर रनिंग अवे फ्रॉम द बिल्डिंग, क्योंकि ये गेस्ट हो गए और होटल वर्कर हो गए तो जमा हुए, सो वर रनिंग अवे फ्रॉम द बिल्डिंग। एंड नेक्स्ट वन है रेस्क्यू वर्कर वाज हेल्पिंग, रेस्क्यू वर्कर एक वर्कर था, वाज हेल्पिंग पीपल विद बेड बोन। तो इसी तरह आप वाज या वर लगाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन है, ये सवालिया स्ट्रक्चर है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? गुड। Was a photographer taking picture during the fire? Yes, he was. Yeah, no, he wasn't. Yes, he was. The second question. Good. Were rescue workers helping people with burn? Yes, they were. No, they weren't. Question वर में है तो जवाब भी वर में होंगे। रेस्क्यू वर्कर्स एक से ज्यादा थे। The third question is who was rescuing the guest? So rescue who was rescuing the guest? The rescue workers were rescuing the guest. यहाँ जवाब में हम वर लगाएंगे क्योंकि बंदे ज्यादा थे। Fourth number question. What was coming from the window? So smoke was coming from the window. Window से क्या आ रहा था? Smoke was coming from the window. And the next one. Who were the firefighter rescuing? वो firefighter किन लोगों को rescue कर रहे थे? So they were rescuing the guest. ये WH question में यहाँ practice है. Who were the firefighter rescuing? What were the firefighter using? Where were the firefighter working? So ये WH वाला question है जो यहाँ हमने discuss किया. Next one question क्या है? Yeah, the firefighter were using ladders to rescue the people. And 7 number. Yeah, the ambulances were taking people to the hospital. Where mean कहाँ ले जा रहे थे? To the hospital. So इसी तरह आप भी एटलीस्ट 20 और 30 क्वेश्चन कर ले, पॉजिटिव सेंटेंसेस लिख के, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड क्वेश्चन, एंड ट्राई टू यूज इट इन योर डे टू डे लाइफ too much when you are talking about such activity which continue in the past. So talk about the past continuous tense. I hope you will have learned this activity. Try to share it with all your near and dear one, and try to watch it again and again. Thank you so much. Khuda Hafiz.